Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. As you know, we have started this series of 101 golden rules of English grammar. Students who are going to appear in PMS, PCS, CSS and other competitive exams must watch this video because this series may help them in English portion. So if you would like to qualify the English portion, then you must watch this series. Today we have brought rule number 10 for you. If you haven't watched previous rules, then you may click on the I symbol in this right corner of the video. Before going to start, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon to get notification about all 101 golden rules of English grammar. So what is rule number 10 for today? In English grammar, a great many is always followed by a plural noun and a plural verb. Today's rule is somehow related to rule number 7. If you haven't watched rule number 7, then you may click in the right corner of this video the I symbol. You will be directed to rule number 7. तो आज के इस रूल नंबर 10 में क्या कहा गया है कि जब अ ग्रेट मैनी एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो सेंटेंस में तो उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होंगे. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल. अब देखें, अ ग्रेट मैनी इस्तेमाल हो गया है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा और हैव होगा, क्योंकि नाउन भी हमें प्लूरल यूज़ करना है और वर्ब भी प्लूरल यूज़ करना है. तो इसका करेक्ट क्या होगा? अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल. तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्मार्ट रूल समझ में आया होगा और एंजॉय किया होगा आपने. अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द इंग्लिश पोर्शन ऑफ CSS, PCS, PMS और एनी competitive exam which is based on single paper or one paper, just like Inspector Inland Revenue, FIA Inspector, Assistant Director in FIA and other single paper exam. So please subscribe our channel, like the video and share it with your friends so that you may get notification about 101 golden rules of English grammar. Thank you. Allah Hafiz.